Assalamu alaikum. Today we are going to discuss cloud computing. तो आज इस सिलसिले में हम पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग के मॉडल के ऊपर ही क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जैसे ही इवॉल्व हुई और इसमें इंटरनेट के ऊपर हमारे पास स्केलेबल इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हुए और हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हुई जिनके ज़रिए हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ डिफरेंट इसमें जो टेक्नोलॉजीज हैं वो भी इवॉल्व हो गई। लाइक वी कैन हैव क्लस्टर्स ऑफ कोऑपरेटिव कंप्यूटर्स, वी कैन हैव ग्रिड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, and on top of all we have cloud computing. तो पहले हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या कुछ हम कर सकते हैं, और देन फिर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को डिस्कस करेंगे। जो इस कोर्स में हम थ्रू आउट द कोर्स हम डिस्कस करेंगे वो क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर करेंगे। तो आज स्टार्ट करेंगे बेसिक से कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या होती है। A distributed system consists of multiple autonomous computers that communicate through a computer network. तो हमारे पास एक ऐसा नेटवर्क है जिसके ज़रिए हमारे पास different autonomous computers they are interconnected with each other. तो जो ये autonomous computers हैं, like we have a web server, we have a domain server, we have a storage server. They are all autonomous and they are providing different functionalities. What does distributed computing do is to utilize a network of many computers, each accomplishing a portion of an overall task to achieve a computational result much more quickly than with a single computer. तो बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जिनको कंप्लीट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन पावर की ज़रूरत होती है, जो कि एक सिंगल कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं होती। या अगर हम कोई सुपर कंप्यूटर या कोई इस तरह का कोई हाई एंड कंप्यूटर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर जो है वो हमें ये ऑप्शन देता है, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर, कि हम बहुत से कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होते हैं उनके ऊपर एक बड़े टास्क को स्मॉलर टास्क में डिवाइड करके तो हमारा जो बिगर टास्क है उसको कंप्लीट कर लें। Distributed computing is type of computing that involves multiple computers remote from each other, with each having a role in a computation problem or information processing. Distributed computing में हमारे पास जो different computers जो connected होते हैं over the network, they are not on the same room or not in the same building. They could be in different geographic locations, but they are all connected and taking part in solving a bigger task. Each and every computer have its role in this processing of information. A distributed system is one in which hardware or software components located at networked computers communicate and coordinate their action only by message passing. तो आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर व्हेन डिफरेंट प्रोसेसेस communicate with each other, they have three models. One of them was message passing. तो मैसेज पासिंग के ज़रिए लाइक जिस तरह प्रोसेसेस दे कैन कम्युनिकेट, इसी तरह जो सिस्टम्स होते हैं and those are connected over the network, they can communicate and coordinate for different tasks they were being assigned. In the term distributed computing, the word distributed means spread out across space.
अब जो spread out across है, it means computers are located at different locations, at different geographic location. तो जो distributed computing है, तो हम कह सकते हैं distributed computing एक ऐसी एक्टिविटी है जो उन कंप्यूटर्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है जो किसी सेंट्रल लोकेशन के ऊपर या एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर लोकेटेड नहीं होती। और ये जो कंप्यूटर्स होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हों, ये भी हो सकता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लैब है एंड वी वांट टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम एंड कॉम्प्लेक्स टास्क, तो हम उस टास्क को उस लैब के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के ऊपर डिवाइड करते हैं। वो लैब हो सकती है, कैंपस की डिफरेंट लैब्स हो सकती है, या विद इन कंट्री के अंदर वो कंप्यूटर हो सकते हैं, और इवन अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया में ऑन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आपके डिफरेंट लैब्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशन जिनके अंदर बहुत से कंप्यूटर डिप्लॉयड हैं, और आप उन सब कंप्यूटर्स की कंप्यूटेशन पावर को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग ने एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव दिया कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत ज़्यादा डेटा है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड सुपर कंप्यूटर्स, then they can have another alternative to process their data. तो ये हमारे पास एक आर्किटेक्चर है जिसमें एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन है, और इस लार्ज स्केल एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास बहुत सा डेटा है, बहुत सी इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड है। तो अब ये जो लार्ज स्केल एप्लीकेशन है ये डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है ओवर द इंटरनेट क्लाउड। लाइक ये एक एजेंट है, ये एक एजेंट कंप्यूटर है, ये एक एजेंट कंप्यूटर है, और ये कंप्यूटर साइंस के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट है। और ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट कंप्यूटर साइंस है, दिस प्रोवाइड्स या मेंटेन सब्सक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एजेंट्स टू दी to this computer, and this computer is have a connection with large scale application। और ये जो लार्ज स्केल एप्लीकेशन है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है among different agents, and they does their part and provide cooperation with each other, and all this information is forwarded to resource management, which is providing a resource management facility। A distributed system consists of collection of autonomous computer, as we can see in this diagram, connected through a network and distributed operating system software। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसके अंदर बहुत से ऑटोनोमस कंप्यूटर्स होते हैं जिनको एक नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाता है, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होता है। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए, जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, इसके ज़रिए जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं दे कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, और जो भी वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको वो शेयर कर सकते हैं। और जो रिसोर्सेज दे कैन शेयर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा, ताकि जो यूज़र्स हैं दे कैन परसीव द सिस्टम एज सिंगल इंटीग्रेटेड कंप्यूटिंग फैसिलिटी। तो अब जो computing facility है, it comprises of all these agents with large scale application with the distributed system software, but
To the user, this is a single unit entity. एप्लीकेशन जो भी आती है, जो भी डेटा प्रोसेस होता है, उसके लिए ये आर्किटेक्चर जो है वो ट्रांसपेरेंट है. इसकी जो डेफिनेशन है, a distributed system is a collection of independent computers that appears to its users as a single coherent system. This definition has several important aspects. The first one is that a distributed system consists of components, that is computers, that are autonomous. A second aspect is that users, be they people or programs, think they are dealing with a single system. तो उनके लिए, यूजर्स के लिए जो ये सिस्टम है, इसका जो आर्किटेक्चर है वो ट्रांसपेरेंट होता है. This means that one way or the other, the autonomous components need to collaborate. How to establish this collaboration lies at the heart of developing distributed system. In principle, even within a single system, they could range from high performance mainframe computers to small nodes. In sensor networks, likewise, no assumptions are made on the way that the computers are interconnected. तो इसमें जो ये डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, दे कुड बी एनी ऑफ स्केल, लाइक कोई इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई पर्सनल कंप्यूटर हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, और इवन जो सर्वर्स होते हैं, दे कुड बी द पार्ट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. What was the motivation behind building this type of architecture? Number one was inherently distributed application. The main motivation in moving to a distributed system are inherently distributed application. In distributed system, they have come into existing in some very natural ways. In our society, people are distributed, and information should also be distributed. Distributed database system, information is generated at different branch offices, sub-databases, so that a local access can be done quickly. The system also provides a global view to support various global operation. तो जो distributed की जो applications हैं, this is inherent type of application, like we are the human beings, we are distributed on different locations, and we have to process data and information. Likewise, जो systems हैं, उसमें भी ये डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर जो है वो अप्लाई किया जाता है. लाइक बैंकिंग सेक्टर में जो रिमोट ब्रांचेस हैं, उनके पास लोकली डेटाबेस अवेलेबल होता है, जो लोकल यूजर्स हैं या जो डेटा उनके पास होता है, जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने वहाँ से लेनी होती है तो वो वहाँ से ले सकते हैं. और वो जो सारी ब्रांचेस हैं, दे आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल ब्रांच, ताकि अगर ग्लोबल व्यू हो, हर ब्रांच की रिपोर्ट, उसकी ट्रांजैक्शन, उसके नंबर ऑफ अकाउंट्स वगैरह को चेक करना हो, तो एक ग्लोबल व्यू भी अवेलेबल होता है ताकि उसको चेक किया जा सके. तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस की एप्लीकेशंस हैं, और इस तरह की और बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे ये आर्किटेक्चर जो है वो डिप्लॉयड है. सेकंड, इसकी जो मोटिवेशन थी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को अडॉप्ट करने की, वो थी परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास जो बहुत से रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर्स हैं, दे कैन परफॉर्म इन पैरेलल फैशन. तो इस वजह से जब हम बहुत से जो स्मॉल स्केल सिस्टम्स होते हैं या लो एंड सिस्टम्स हैं जिनकी प्रोसेसिंग पावर कम है, उनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम बहुत से कॉम्प्लेक्स टास्क लेस प्राइस में कर सकते हैं, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती है. Number 3 motivation behind the
distributed system was resource sharing. Distributed system can efficiently support information and resource, एंड जो रिसोर्स है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, शेयरिंग फॉर यूजर्स एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ये एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि वी कैन शेयर रिसोर्सेज, चाहे हार्डवेयर हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, और चाहे कोई डेटा है एंड वी वांट टू शेयर अक्रॉस द नेटवर्क, वो भी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी। Distributed systems are capable of incremental growth and have the added advantage of facilitating modification or extension of a system to adapt to a changing environment without disrupting its operation. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारे पास पहले 10 रिसोर्स हमने, चाहे वो हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट का पार्ट है। तो अगर हमने 10 से 20 करने हो या 20 से 15 करने हो, तो इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम उसको इजीली कर सकते हैं, हम उसको स्केल अप भी कर सकते हैं और स्केल डाउन भी कर सकते हैं। तो ये एक इसमें ऑप्शन है, फ्लेक्सिबिलिटी है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर, कि अगर हमने इसमें कोई रिसोर्स को ऐड करना है या रिमूव करना है, वो हम इजीली कर सकते हैं। और जब हम इसको स्केल अप करें या स्केल डाउन करें, उससे जो भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं डे टू डे, उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस। With the multiplicity of storage units and processing elements, distributed systems have the potential ability to continue operation in the presence of failure in the system, because there is no central system which has all the storage. There is no central system which has all the processing power. So everything is distributed across the network. That is why if a single unit goes down, there is no problem with the operation of the entire network. That is why we can say that distributed systems are always available and fault tolerant. Next motivation is scalability. Distributed systems can be easily scaled to include additional resources, both hardware or software. We can easily add systems and data or information into our distributed system. And next motivation is network connectivity is increasing. With the passage of time, internet is available throughout the globe. बहुत से ऐसे एरियाज जो कि रिमोट एरियाज से, जहाँ पे पहले इंटरनेट का या नेटवर्क कनेक्टिविटी वाज नॉट अवेलेबल, नाउ दे आर इन कवर्ड एरियाज। अब वहाँ पे जो नेटवर्क है, इंटरनेट है, लैंडलाइन, DSL, 4G, और नाउ वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स 5G, ये सारे नेटवर्क ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा था, उसी को यूटिलाइज किया गया है कि जब हमारे पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस हैं, हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस हैं, व्हाई नॉट वी यूज all the resources, those are interconnected with each other. Combination of cheap processor often more cost effective than one expensive fast system. तो लैब के जो routine systems हैं, those are having cheap processors, and those systems are not high end. उन सब सिस्टम्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उन सब की जो प्रोसेसिंग पावर को हम कंबाइन करके कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसकी मोटिवेशन थी। Then potential increase of reliability, because there is no bottleneck, there is no central point of failure. That is why this system were providing a potential of increase of reliability. Now let's come to the history of distributed system. First, we will discuss the era of 1975 and 1985.
parallel computing was favored in the early years. The use of concurrent processes that communicate by message passing has its roots in operating system architecture studied in 1960s. The first widespread distributed system were local area networks such as Ethernet that was invented in 1970s. ARPANET, the predecessor of the internet, was introduced in the late 1960s, and ARPANET email was invented in the early 1970s. तो जो ईमेल था वो सबसे एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था ARPANET का, और ये सबसे पहली एग्जांपल है, अर्लीस्ट एग्जांपल्स आप कह रहे हैं, और भी बहुत सी एग्जांपल्स थी जिसमें ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर फॉलो किया गया था। ARPANET के अलावा जो इंटरनेट था वो दैट वाज द ओनली वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें यूजनेट और फिडोनेट जो 1980s में यूज हो रहे थे। तो ये जो यूजनेट था और फिडोनेट था, इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्कशन सिस्टम थे जिनको यूज किया जाता था। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की जो अपना जो डिसिप्लिन था, एज ए डिसिप्लिन जो इंट्रोड्यूस हुआ, वो लेट 1970s में इसको एज ए सेपरेट डिसिप्लिन जो है वो कंसीडर करना शुरू कर दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो अलग से डिसिप्लिन है। The first conference in the field, Symposium on Principles of Distributed Computing, PODC, dates back to 1982, and its European counterpart, International Symposium on Distributed Computing, was first held in 1985. तो ये दो कॉन्फ्रेंसेस जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के ऊपर होती थी 1982 से स्टार्ट हुई। जो फर्स्ट थी सिंपोजियम ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग 1982 में, और उसके बाद जो इसी का यूरोपियन काउंटरपार्ट था इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है वो 1985 में हेल्ड हुई। द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग प्रोग्राम were a pair of programs called Creeper and Reaper. तो क्रीपर एक प्रोग्राम था और रीपर एक प्रोग्राम था। इनको पहला वायरस भी कहा जाता है। तो जो क्रीपर प्रोग्राम था वो क्या करता था, अपने आप को डिफरेंट सिस्टम के ऊपर कॉपी करता था, और जो रीपर था वो उसको डिलीट करता था। The Creeper came first and was a worm program using the idle CPU cycles of processors in the ARPANET to copy itself onto the next system and then delete itself from the previous one. Then it was modified to remain on all previous computers, and the Reaper was created, which traveled through the same network and deleted all copies of the Creeper. In this way, Creeper and Reaper were the first infectious computer programs and are actually often thought of as the first network viruses. They did no damage, however, to the computers they passes through and were instrumental in the exploring the possibility of making use of idle computational power. तो ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि जो आइडल सीपीयूज हैं उन साइकिल्स को यूज करके क्रीपर अपने आप को डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर कॉपी करता था और फिर बाद में जो प्रीवियस सिस्टम के ऊपर उसको डिलीट कर देता था। तो बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया और जो वो ये कॉपी क्रिएट करता था सिस्टम के ऊपर वो वहीं रहती थी और ये नेक्स्ट कॉपी करता रहता था। फिर एक और जो इसका वर्जन था रीपर वो बनाया गया जो इसकी कॉपीज थी उसको डिलीट करता था। तो ये फर्स्ट जो कंसेप्चुअल मॉडल था इसका इसी बेस पे बना कि ये जो आइडल सीपीयू पावर है उसको यूटिलाइज करके कोई भी कंप्यूटेशन या कोई प्रोसेसिंग जो है वो की जा सकती है।
अब डिस्कस करते हैं 1985 और 1995. Massively parallel architecture start rising and message passing interface and other libraries developed. The first internet-based distributed computing project was started in 1988 by DEC, System Research Center. The project sent tasks to volunteers through email who would run these programs during idle time and then send the results back to DEC and get a new task. The project worked to factor large number and 1990s had about 100 users. The most prominent group considered the first to actually use the internet to distribute data for calculation and collect the result was a project founded in 1997 called distributed.net. They used independently owned computers as DEC and DEC had but allowed the users to download the programs that would utilize their idle CPU time instead of emailing to them. Distributed.net completes several cryptology challenges by RSA Labs as well as other research facilities with the help of thousands of users. तो पहले तो जो डेक ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था उसमें जितने भी प्रोसेसिंग टास्क थे वो ईमेल किए जाते थे. जो यूजर्स थे वो उन प्रोग्राम को अपने सिस्टम के ऊपर रन करते थे और उनके रिजल्ट को डेक सिस्टम को वापस सेंड कर देते थे. और इस तरह ये जो प्रोजेक्ट है वो चलता रहा और इसमें तकरीबन 100 यूज़र तक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे. उसके बाद distributed.net ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 1997 में और इसमें जो कंसिडर किया जाता है कि इंटरनेट को यूज़ किया गया था जिसके ज़रिए डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता था और उसी इंटरनेट के ज़रिए एक एप्लीकेशन जो है यूज़र अपने सिस्टम पर डाउनलोड करते थे और डेटा भी उनके सिस्टम पर डाउनलोड होता था. और जब उनके सीपीयू का आइडल टाइम होता था तब वो एप्लीकेशन वो डेटा प्रोसेस करती थी यूजिंग देयर प्रोसेसिंग पावर और उसके रिजल्ट को ऑटोमेटिकली खुद ही वापस सेंड कर रही होती थी. तो अभी जो करंट एरा है 1995 एंड टुडे एंड ऑनवर्ड्स, तो इसमें क्लस्टर ग्रिड आर्किटेक्चर जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं. अब जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बाद का जो नेक्स्ट एवोल्यूशन है वो क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग है. तो स्पेशल नोड मैकेनिज्म वर अवॉइडेड इन फेवर ऑफ कॉट्स टेक्नोलॉजीज. तो ये कॉट्स टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं? कॉट्स का मतलब है कमर्शियल ऑफ द शेल्फ. ये एक टर्म है जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर दोनों के लिए यूज हो सकती है. कमर्शियल ऑफ द शेल्फ का मतलब है कि ऐसे रेडिली अवेलेबल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सॉल्यूशन जो कंपनी अपने इन हाउस जो डेवलपमेंट है वहाँ से यूज़ नहीं करती बल्कि मार्केट से कमर्शियली एक्वायर करती हैं. तो COTS is a term for software or hardware, generally technology or computer products that are ready-made and available for sales, lease or license to general public. They are often used as alternative to in-house development or one of government-funded developments. The use of COTS is being mandated across many governments and business programs as they may offer significant savings in procurement and maintenance. However, since COTS software specifications are written by external sources, government agencies are sometimes wary of these products because they fear the future changes to the product will not be under their control. तो ये जो कॉट्स प्रोडक्ट्स होती हैं वो जर्नल स्पेसिफिकेशन के ऊपर बनी होती हैं. तो दे आर बजट प्रोडक्ट्स, दे आर इकोनॉमिकल इन यूज़ बिकॉज दे आर अवेलेबल इन द मार्केट. लेकिन इनका ये प्रॉब्लम होता है कि अगर इसमें अगर कोई उस कस्टमाइजेशन करनी हो, उसमें कोई चेंज करना हो
तो उसमें मे बी वो चेंजेस जो हैं वो कंट्रोल में ना आए। तो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के बाद ये क्लस्टर और ये जो ग्रिड आर्किटेक्चर जो है वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया, लेकिन गूगल ने इसको एक्सट्रीम पे ले गया और उसमें जो प्रोडक्ट यूज हुई वो SCTI एट होम, जो 1999 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और ये प्रोजेक्ट जो था, इट वाज एनालाइजिंग द रेडियो सिग्नल दैट वर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द एरिसीबो रेडियो टेलीस्कोप इन पोर्टो रिको। दिस इज द ऑब्जर्वेटरी ऑफ एरिसीबो। तो ये रेडियो सिग्नल्स रिसीव करता है ये जो ऑब्जर्वेटरी है, और इस ऑब्जर्वेटरी को यूज़ किया जाता था कैलिफोर्निया में, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कले। This project was started in May 1999 to analyze the radio signal that were being collected by the Arecibo radio telescope in Puerto Rico. It has gained over 3 million independent users. तो इसमें 3 million independent users थे who volunteer their computers to search for signal that may not have originated from Earth. This project has really brought the field of to light, so other groups and companies are quickly following their leads. तो जो सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस का मतलब है, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल का मतलब है कि ऐसे सिग्नल जो ज़मीन से जनरेट नहीं हो रहे होते, कहीं से डीप स्पेस से या किसी और दुनिया से जो है ये ऑब्जर्वेटरी रिसीव कर रही होती थी। तो उन सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए हाई एंड कंप्यूटर्स रिक्वायर्ड थे। तो इस प्रोजेक्ट में जो गूगल ने स्टार्ट किया, तकरीबन 3 मिलियन यूजर्स ने पार्टिसिपेट किया।